सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Sundar ji, video can stay off and mute unmuted. It's okay. शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा. Pile of sham 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 in it, which is one of the words in the last. Yes, very nice. Generally, we will do shloka mantra before the Shanti mantra. I know. I got a bit late. Because after Shanti mantra, we will record it. We don't know how to do it. Sorry. No. अस्तु, अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति अभ्यास 16, 16th अभ्यास, पृष्ठक्रमाङ्कः 32 अथवा 32, 32। अस्तु, केतुल जी कृपया पठतु प्रथमः क इति। युष्मल् तु सर्वदा सिंहः सिंहः प्रातःकालः प्रातःकालः मध्याह्नं दोपहरः सायंकालः सायंकालः मार्गः मार्गः निशा रात्रि। धन्यवादः। एकनिमिषः। युष्मल्, युष्मल् शब्द इति टू फॉर यू। तो दिस होल थिंग वी विल सी। वयं पश्यामः। सिंहः प्रातःकालः मध्याह्नः सायंकालः मार्गः सर्वे पुल्लिङ्गशब्दानि सन्ति। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानि। सिंहः लायन, प्रातःकालः मॉर्निंग, मध्याह्नः आफ्टरनून, सायंकालः इवनिंग, मार्गः रोड अथवा पाथ्स। वी आर ऑन पेज 32 अभ्यास 16। निशा इति स्त्रीलिङ्गशब्द अस्ति। निशा रात्रि। ख धातु शब्दानि। सेव धातु सेवा कर्म। अस्तु, अवंतिका जी कृपया पठतु अग्रे। सेवन सेवया सेव सेवा करना। लव पाना। वृद्ध बढ़ना। मुद प्रसन्न होना। सह सहना। याच मांगना। रुत होना। इक्ष देखना। निरीक्ष देखना। निरीक्षण करना। वद प्रणाम करना। भाष कहना। कुर्द कूदना। यत्न करना। शिक्ष सीखना। कंप कापना। भिक्ष मांगना। इह चाहना। शुभ शोभित होना। रम लगना अथवा रमण करना। बहु सम्यक्, धन्यवादः। सर्वे धातुशब्दानि सर्वे भाष्यायां टीकायां मंत्रेषु अपि मंत्रेषु श्लोकेषु अपि बहुप्रयोगः अस्ति। सेव धातु, लभ धातु, वृद्ध धातु सर्वे भगवद्गीतासु उपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु सर्वे धातु शब्दानि बहु प्रयोगः अस्ति। जैसे
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीमद्भगवद्गीता 4th अध्याय. श्रद्धावान लभते ज्ञानम. वृद्ध बढ़ना, to grow. Anyone remembers the 6 types of transformations? जैसे यास्काचार्य वर्धते. हाँ, related to atma. ये वर्धते is one of them. हाँ, related. जायते वर्धते क्षीयते पक्षीयते हाँ, सुंदर जी भावना. there is a growth. सम्यक. three you have said, Antika ji. जायते वर्धते अपक्षीयते you said. 3 more are there. Kim? The final one is Vinashyati. सम्यक. I don't remember in English, Sanskrit. Vinashyati. और हिंदी अथवा इंग्लिश में 2 और हैं. प्रथमा अस्ति. विपरिणमते. विपरिणमते. सम्यक. विपरिणमते. हाँ. अस्ति जायते. No, I'm sorry. सम्यक. Wrong. सम्यक. No. अस्ति जायते क्षीयते पक्षीयते वर्धते. Are you? And Sundar ji did that one. Asti jayate vardate. So because vardate is to grow. Asti jayate vardate Then apakshiyate. Then viparinamate. No. Viparinamate. and then final one is Vinashyati. विनश्यति. Vinashyati. विनश्य. अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति. उसमें वर्धते तीसरे वही है वृद्ध धातु, बढ़ना, वर्धते. सो दैट इज गिवन हियर. तो जैसे सर्वे शब्दानि बहु प्रयोगः अस्ति उपनिषत्सु, बहु श्लोकेषु मंत्रेषु इति वा. मुद प्रसन्न होना, टू बी हैप्पी, टू बिकम हैप्पी. सह सहना, टॉलरेट. सहनम सर्वदुःखानाम् अप्रतीकारपूर्वकं. विवेकचूडामणि. चिंताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते. सा तितिक्षा, that तितिक्षा शब्द सहनम is used. So sahanam is used in such context. सह. याच धातु मांगना, वृत्त होना, वर्तते इति. ईक्ष धातु देखना. ईक्ष धातु in Upanishad it comes. Anyone remembers? Ikshate. हाँ, ईक्षते. अहम इच्छते. सईक्षते बहुस्यां प्रजायेति. तैत्रीय and Chandogya also. सईक्षते बहुस्यां प्रजायेति. Twice it comes. सम्यक. ईक्षते. Then निरीक्षते, देखना, to see, अथवा निरीक्षण करना also, like guide or supervise, oversee. वंद, प्रणाम करना, to do नमस्कार, to do प्रणाम. भाष, कहना, to speak. कूर्द, कूदना, jump. हाँ, कोई प्रश्न अस्ति वा? किम् अस्ति प्रश्न? This Vanda and Nama. हाँ. Both are same. हाँ, they are same. Nam is more action. जैसे namati will actually be to do namaskara. Vand will be even mentally. अहम वंदते, जैसे अहम वंदे, जैसे वंदे मातरम. But we will not say namaste mataram or namami mataram. We will say vande. So more mentally, generally will be vanda. जैसे in that 9 forms of bhakti in Srimad Bhagavatam, vandana is one. But namati is not one. Namati is more like the action. Anyone remembers that shloka? Vandana, Shravana Kirtan, Smaran. हाँ, सुंदर जी. Archanam is also there. हाँ. Atma Nivedanam, the final one. Atma सम्यक. Nivedanam. हाँ. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम. इस द षष्ठ. दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन. अथवा सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन. दास्यम, सख्यम. The 9 that vandanam is one. So vandanam is more mental. Namaskar is more physical. That's the benefits. पीछे यत्न करना, effort. शिक्ष, to do effort. शिक्ष, सीखना, to learn. कंप, कांपना, to shudder or shake, tremble, ऐसे.
भिक्ष मांगना, जैसे याच, याच धातु भिक्ष धातु उभयोः मांगना अर्थे स्तः ईह, ईह चाहना, ईहते ईहेते ईहन्ते इतिवत्। शुभ शोभित होना, रम लगना रमण करना, रमण करना टू एंजॉय इट। अस्तु व्याकरण सूचना सिंह तो मार्ग रामवत्, तो सिंह मार्ग सर्वे पुल्लिंग शब्दानि सन्ति, आकारान्त पुल्लिंग शब्द। सेव रम सेवतेवत्, तो दैट वी विल सी लेटर। युष्मद् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। पृष्ठ क्रमांकः 100 134. हाँ, सुंदर जी भावानेव पठतु कृपया। 134। त्वम युवाम यूयम, हाँ, त्वाम अथवा त्वाम, युवाम युष्मान अथवा युवः, हाँ, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम अथवा ते युवाम युवाभ्याम अथवा वाम, अथवा वह। But in between, for the Dvitiya, it is I think yuvam. No, yuvabhyam. युवाभ्याम, Okay. Then Tvet yuvabhyam Tvat. yushmat. त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, Tvat yuvabhyam yushmat. हाँ, Tava अथवा ते युवयोः अथवा युवाम युष्माकम अथवा युवः। युवः नास्ति, वाह, वाह वाम, वैसे युवो युवयोः अथवा वाम, युष्माभ्यम युष्माकम अथवा वाह, वैसे वाह। दिस वन। हाँ, आप तो पूछिए। त्वयि हाँ। युवयोः युष्मासु। बहु सम्यक्, धन्यवादः। त्वं युवां यूयं, त्वां त्वा इस् द्वितीय प्रयोगः अपि अस्ति। द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, द्वे द्वे प्रयोगे स्तः। Normally it is used in like, जैसे in shloka etc. for chandas they will not say yushmakam or yushman, they will just say vaha. जैसे भद्रम नो अपिवातय मनः, we are not saying भद्रम अस्माकं अपिवातय मनः, भद्रम नो अपिवातय। So that to reduce the amount of letters is द्वितीय प्रयोगः अस्ति वास्तवे। हाँ, अस्तु, अवन्तिका जी कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? Sorry, I found it. नो प्राब्लम्। अस्तु, बैक् टु पेज्, पृष्ठक्रमाङ्कः 32, 32। सेव् धातु लट्लकार आत्मनेपद। अस्तु, अद्यतनविषयः अस्ति आत्मनेपदीय धातु। आत्मनेपदीय इस् फार् सेल्फ्, परस्मैपदीय और आत्मनेपदीय उभयोः भेदः अस्ति। परस्मैपद और आत्मनेपद धातु धातवः भेदः अस्ति इन धातु। संध्या जी कृपया पठतु सेव धातु लट्लकार आत्मनेपद। सेवते सेवते सेवेते, सेवेते हाँ, सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवथे सेवेथे, सेवथे हाँ, सेवध्वे हाँ, सेवे सेवाभिः हाँ, वह्वे सेवामहे। हाँ, सम्यक्, धन्यवादः। सेवते सेवेते सेवन्ते। In the book, if anybody has the copy of the physical book, correction is there. Sevadhye is given, it is sevadhve. Dvitiya vibhakti bahuvachana. Sevadhye nasti, sevadhve. सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेते सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवा। संक्षिप्त रूप में, इन संक्षिप्त रूपे सम्यक् अस्ति, समीचीनम् अस्ति। संक्षिप्त रूपे दक्षिणपक्षे on the right side पुनः संक्षिप्त रूपे सम्यक् अस्ति। मध्यमपुरुष बहुवचन, मध्यमपुरुष बहुवचन अध्वे, सेवध्वे। ऐसे केतुजी कृपया वदतु लब् धातु किं भवति? सेव् धातु इति वा? लभते, हाँ, लभेते, लभन्ते।
हाँ लभसे लभे थे लभद्वे हाँ लभे हाँ लभावहे लभामहे बहु सम्यक् लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेते लभद्वे लभे लभे लभावहे लभामहे सुन्दरजी कृपया वदतु ईक्ष् धातु किं भवति ईक्षातु ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षद्वे ईक्षे ईक्षद्वे ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे बहु सम्यक् धन्यवादः अवन्तिका जी कृपया वदतु रम् धातु रमते रमेते रमन्ते रमसे रमेथे रमद्वे रमे रमावहे रमावहे रमामहे बहु सम्यक् धन्यवादः तो इन दिस वे सर्वे धातवः इतिवत् प्रयोगः भविष्यन्ति दे विल बी इतिवत् अस्तु संक्षिप्त रूप लगाकर लभ आदि के रूप बनाओ वी हैव डन लभते ईक्षते रमते सूचना भादिगण की सभी आत्मनेपदों धातुओं आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव के तुल्य चलेंगे तो प्रथमे कक्षायां वयम् अपश्यामः वी हैड सीन दशम गणाः सन्ति इन टोटल 2000 धातुस् in Panini Sashtadhyayi they are mentioned or at least indirectly referred to. They are all in 10 ganas dashama gana santi dashama ganasya gananam prathamaha ganah asti bhadi gana jaise bhu dhatu so many dhatus are in bhadi gana so all dhatus in that gana will follow that way only jaise sev dhatu वैसे ही लभ धातु भाष धातु ईक्ष धातु निरीक्ष धातु सर्वे भू धातु वैसे सर्वे पट धातु पट जैसे ही खाद धातु क्रीड धातु गम धातु सर्वे अस्तु नियम 270 72 नियम नंबर 70 अथवा द्विसप्ततिः उभयोः सम्यक् सन्ति सम्यक् स्तः आधारो अधिकरणं 1.4.45 आधारो अधिकरणं किं वर्तते किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है तो अद्यतन विषय अस्ति सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति अधिकरण सप्तमी अस्ति विषय सप्तमी अपि अस्ति अधिकरण सप्तमी इज व्हेन देयर इज अ लोकेशन सो इसे अहम गृहे वसामि so गृहे इज अधिकरण सप्तमी गृह इन दिस लोकेशन अथवा अहम ऋषिकेश नगरे अस्मि आई एम इन ऋषिकेश इति आधारो अधिकरणम् अस्तु नियम 370 But what would be Vishesha? The other one? Vishaya Saptami will be something like Bhutale Gataha. That is Vishaya Saptami, I think. Many Nyaya Prayogas will be done with Vishaya Saptami. Recently in Brihadaranyaka there was one. I don't remember. I will see and tell you. But Vishaya Saptami will be when a specific object, Vishaya, that is used as Saptami Adhikara. It will not be a location as such. Like, would you say that Rupa on a Ghata, blue color on a Ghata will be Vishesha? That is possible. Vishaya Saptami. Vishaya. That is possible. There are better examples, जैसे which is not something physical. Imagine something which is not a physical entity. Something without a physical entity will be Vishaya Saptami. Like, okay, somebody has Sukshma Buddhi. so Buddhi here
If you want to rearrange the sentence, you can say, in buddhi, there is buddhau sukshma vishayah asti. Buddhau Yeah. sukshmatvam asti. That can be. So you can say that. Samya, That will be Vishaya. Vishaya Saptam. There is no specific adhikarana. Some kind of location is not given. Physical, mental location. Vishaya, Akashe Ramate will maybe adhikarana Saptami. Because Akasha, Akashe Ramate, you're saying, right? He is enjoying in space. I think that should be adhikarana Saptami only. Because that Akasha is adhikarana here. Yeah, also because I think Akasha is not Jati. I think you will need Jati here because, then you will say Buddhi. If it stays, it doesn't mean your Buddhi. It can be in any Buddhi. So to Right. that extent, I think that Vishesha can Right, Vishaya. apply. Vishaya. Vishaya can apply. Yeah, this is a nice Vyakarana to Nyaya transition that we are doing. But yes, maybe this is this may work. If it is not a Jati, it could be Vishaya. It's possible. I will see this further and say tomorrow on Monday, because Monday also we will do Saptami Vibhakti only, and I think on Monday we may have Vishaya Saptami. So we may have some more examples on Monday. Adyatana Vishaya asti Adhikarana iti asti niyama trayas saptatihi अथवा त्रिसप्ततिः 73 सप्तमी अधिकरणे च सप्तमी अधिकरणे च 2-3-36 अस्तु सप्तमी अधिकरणे किं सन्धिसूत्रः अस्ति कस्मिन् सन्धिसूत्रः अस्ति सप्तमी अधिकरणे Saptamyadhikarane, E and A. सन्धिसूत्रं Yeah. सम्यक् किं वदति सुन्दरी Saptamyadhikarane. सप्तमी अधिकरणे इको एनर्जी E and eco energy. E and A. इको एनर्जी सूत्रः अस्ति अत्र Yeah. इको यणचि यणचि य एंड यणचि इज हियर सीन हियर सप्तमी अधिकरण सम्यक अधिकरण कारक में सप्तमी होती है इन अधिकरण सप्तमी विल बिगिन विद्यालये पठति विद्यालय इज अधिकरण विद्यालये पठति पाठशालायां पाध्यायाः सन्ति इन पाठशालास देयर आर टीचर्स इन पाठशाला देयर आर टीचर्स एकवचन अस्ति नियम 64 भी देखो 64 चतुष्षष्टि की दिस इज इन पेज नंबर 28 अष्टाविंशति यतश्च निर्धारणम सूत्र 2341 बहुतों में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं छात्राणां रामः श्रेष्ठः दिस इज षष्ठी छात्रेषु रामः श्रेष्ठः सप्तमी तो यहाँ का सप्तमी विभक्ति इज देयर आल्सो छात्रेषु रामः अमंग देम दिस मे बी विषय सप्तमी एक्चुअली such prayogas may be विषय Which one did you read just now? Which page? 28 नियम 64 Oh, 28. Okay. यतश्च निर्धारणम Yatasya Nirvana. Yeah. उसमें छात्राणां छात्रेषु छात्रेषु छात्र is your विषय there is no अधिकरण as such so in this way Yeah, it could be. tomorrow we will on Monday we will have better examples Okay. back to page 32 नियम चतुस्सप्ततिः 74 विषय में बारे में अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है मोक्षे इच्छा अस्ति मोक्ष के विषय में इच्छा है विषय सप्तमी दे आर गिवन मोक्ष के विषय में मोक्षे इच्छा अस्ति इच्छा अस्ति कस्मिन् सूत्र अस्ति Ichha. Arka Dirgha Savarna. हाँ क्लोज अकः सवर्णे दीर्घः ह्यः वयम् अपश्यामः अकः सवर्णे दीर्घः ह्यः नास्ति
अच्छा यह पश्यामः अकासवर्णीयः विषय में बारे में अर्थ में सो मोक्षे इच्छा अस्ति दिने दिवसे प्रातः काले मध्याह्ने सायंकाले वा कार्यं करोति तो ऑल दिस इज विषय शैशवे यौवने वार्धक्ये बाल्य यौवन वृद्धत्व समय में वा पठति तो ऑल दिस समय आल्सो विषय में बारे में अर्थ में सर्वे समयबोधक शब्दों में सप्तमी होती है अस्तु स्तोः श्नाशुः अंत में अन्ते वयं पश्यामः कक्षान्ते अस्तु अभ्यासः 16 पृष्ठक्रमाङ्कः 33 I think 33 will be 33 घर में बालक हैं गृहे बालकः वर्तते अस्तु सुंदर जी कृपया प्रथमा वदतु द्वितीय विद्यालये छात्राः बालिकाश्च वर्तन्ते Okay, so in the school, हाँ हाँ Chatraha, so therefore all the students, Balikascha, so lady students, I guess, all the lady students stay, Vartante stay, they are there. सम्यक् छात्राः is पुल्लिङ्ग so when you say छात्राः it is पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन स्त्रीलिङ्ग will be छात्रा Chatra. तो यहाँ पे छात्राः बालिकाः So it will be male and female students. That's why the cha at the end. Yes, correct. By the way, यहाँ एकः प्रश्नः आसीत् एकः प्रश्नः आसीत् ये प्रत्ययार्थे सुंदर जी भवतः प्रश्नः प्रत्यय they were using why should we use extra words that question came right Yes. उदाहरण किम् आसीत् उदाहरण Udaharan, yesterday it came. Yesterday we did karoti something instead of doing bhojanam. Somewhere, exactly which one it was? Because we said we will use the word karoti, not patati. So patanam karoti as compared to saha patati. Correct. Right. Patanam karoti as compared to patati. I asked Swamiji today. He said in this book they want us to have first increase vocabulary and also reduce the kriya pada. So instead of saying patati and give us more kriya padas that we will know. So they will say patanam karoti, patati, both, so that we are able to understand where the pratyaya is used. That is all. We were overthinking the reason. The simple reason is our vocabulary has to increase. Thank you. Astu. Back to page 33. हाँ सुंदर जी कृपया वदतु 13 तव पुस्तकमहम् ईक्षे. Okay, so tava is 6th case, so your book 16th, right? 16 नहीं 13. Yeah, sorry, I just lost the page. Yeah. Okay, and on the 13th one. Yeah, tava pustakam. So it is tava pustakam aham ikshe. So therefore it is your book I desire. I desire your book. देखना ईक्ष धातु is only देखना ईहे नास्ति ईक्षे. Ikshe. So I desire, I see your book. सम्यक् I see your book. बस तव पुस्तकम् अहम् ईक्षे किं सन्धिसूत्र अस्ति? Okay, so yeah, okay, I thought about that. Yeah, pustakam aham is mo anuswara. सम्यक्. Mo अग्रे. anuswara is one. And then aham ikshate ईक्षे. is हाँ. and e. And e, but it is not coming to an a, so it is not. It is not and e. It is im and e. Aham ईक्षे. Aham. So im and e. Okay. No, This is also you can say mo anuswara because mo anuswara में स्वर होना है ना बस. स्वर होना है. Correct. E is also स्वर.
So you no can say anuswara, correct. no anuswara only, Correct. but So- that example they had not given. Drishtanta nasti. ग्रन्थस्य अभ्यासः नवम अभ्यासे इतिवत् दृष्टान्तः नास्ति. ई स्वरेण सह दृष्टान्तः नास्ति. अस्वरेण सह अस्ति. अस्तु, धन्यवादः, बहु सम्यक्. हाँ, अवन्तिकाजी कृपया वदतु. तृतीय सः बालः वो. सः बालः तच्च फलम् आसने वर्तते. तच्च फलम् आसने वर्तते. प्रथमः तत्. हाँ, वृत्त से वर्तते है ना, हो ना, वर्तते सम्यक्. वृत्- वृत् से. हाँ, हाँ? करेक्ट. ओके. वृत् धातु. बालक वर्तते मतलब है. हाँ, सः बालक, हाँ. वो बालक, हाँ, तच्च फलम, हाँ, तच्च I didn't get it. हाँ, फलम आसनम वर्तते. हाँ, फल आसन के हाँ, ऊपर है, हाँ, आसन पर है. बट तच्च तच्च. This is a संधि. that तच्च is one संधि is there. संधि विच्छेद करना पड़ेगा पहले. तो संधि विच्छेद will be Next. तत् च. This today's Sandhi. You have not covered that. अच्छा अच्छा, ओके. इट इज सोच नाशु. तो चनच्च. हाँ हाँ, तत् च. तो सः बालकः तच्च फलम् आसने वर्तते. सो दिस बालक तच्च विल बी और वो पल. तच्च फलम् आसने वर्तते. सः बालकः तच्च फलम् आसने वर्तते. तो बालक और फल दोनों आसन पे. यस, दोनों आसन में, आसन पर, और वटेवर सप्तमी अधिकरण सप्तमी. बट एवरीथिंग एल्स वाज करेक्ट. सम्यक् अस्ति. अस्तु, चतुर्दश. त्वयि सत्यं वर्तते. भवती एव. तुम सत्य बोल रहे हो. त्वयि. तुम सत्य हो. हाँ? त्वयि सत्यं वर्तते. त्वयि कस्मिन् विभक्ति अस्ति? तो ये सप्तमी. हाँ, सप्तमी. नहीं पता. तुझ में सप्तमी. त्वयि, इन यू. तुम में सत्य है. हाँ, सम्यक्. Sometimes translation will be simple. सम्यक्, you said correctly. समीचीनम् अस्ति. अस्तु, भवती एव कृपया वदतु. चतुर्थ वदतु. विद्याधर्मेण शोभते. विद्या धर्मेण शोभते. हाँ. विद्या धर्म के साथ अच्छी लगती है. धर्म के द्वारा. द्वारा. धर्मेण कस्मिन् विभक्ति अस्ति? तृतीया. सम्यक्, समीचीनं. तृतीया विभक्ति. तो धर्म के द्वारा विद्या शोभनम् अस्ति. बहु सम्यक्. अस्तु, सन्ध्याजी कृपया वदतु. पञ्चम. सिंह वने निशाय भ्रमति. सिंह हाँ, जंगल में हाँ, रात्रि हाँ, घूम रहा है. हाँ, बहु सम्यक्. सम्यक् अस्ति. समीचीनम्. अन्तिम. किं भवति अन्तिम? आखिरी. मात्रं बोटु माता. हाँ, वन्दे. किं पुरुष कः? वन्दे प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष. कस्मिन्? मध्यम. अहम वन्दे. वन्दे इज लाइक सेवे. यहाँ पे जो 30 पेज 32. प्रथम. नहीं, देखो सेवे पेज 32. सी द सेवे शब्द. तृतीय विभक्ति. हाँ, तृतीया मीन्स उत्तम पुरुष. थर्ड वन उत्तम पुरुष. अहम मात्रं वन्दे. आई बोट मात्र. वैसे सम्यक्. हाँ, अस्तु, भवती एव कृपया वदतु. भवती एव.
सप्तम सायंकाले मार्गे बालः क्रुदन्ति हाँ। क्रुदन्ते हाँ। evening in this road balak like the boy हाँ। क्रुदन्ते means second हाँ, कूदना हाँ। कूदते हैं हाँ, इवनिंग के टाइम पे लाइक इवनिंग बॉयज विल प्ले हियर सम्यक् सम्यक् अस्ति सायंकाले इवनिंग में मतलब सायंकाले मार्गे इन द रोड यहाँ पे इन द रोड बालाः कुर्वन्ति बॉयज आर जंपिंग प्लेइंग वट एवर सम्यक् अस्ति अस्तु केतुलजी कृपया वदतु अष्टम हाँ हाँ आप गुरु की सेवा करते हैं, सुख पाते हैं और आनंद सुख आनंद पाते हैं और वृद्धि भी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं सम्यक् बहु सम्यक् षष्ठ यति ही धर्मे यति ही धर्मे रमते, यति धर्म में रमण कर रहे हैं, हाँ सम्यक् बहु सम्यक् रमण करते हैं, हाँ रमण करते हैं यति रमण में करते हैं और एक और एकमपि च एकादश हाँ एकादश त्वया सहायं कः अस्ति, हाँ त्वया सहायं कः अस्ति कः अस्ति, हाँ कः अस्ति त्वया सहायं आपको क्या सहाय चाहिए, त्वः सहायं सहायं कः, जैसे हम बोलते हैं अहम मित्रेण सह पाठशालां गच्छामि वित् मित्र तो सहायं अच्छा सह अयं हाँ सहायं त्वया, त्वया सह अयं कः अस्ति आपके साथ हाँ मैं बहु सम्यक् अयं कः अहं नास्ति अयं यहाँ पे यहाँ हियर अच्छा दिस रादर त्वया सह आपके साथ अयं कहाँ अस्ति हु इज हियर आपके साथ यह कौन है, हु इज दिस विथ यू ये कौन है आपके साथ ऐसे हाँ सम्यक् सम्यक् अस्ति अस्तु हाँ आभाजी कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा जी हाँ। जो छठा वाक्य था हाँ यति ही धर्मे रमते, हाँ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट वंस? हाँ अस्तु यति ही धर्मे रमते यति ही इज यति सन्यासी योगी धर्मे रमते ही इज एंजॉयिंग बीइंग इन धर्म सो दिस इज नॉट अधिकरण सप्तमी दिस विल बी दैट विषय में सो इन धर्म यति ही रमते ही इज एंजॉयिंग as in dharma he enjoys ramate lagna he is in dharma ram dhatu द्वे अर्थे स्तः रम धातोः एकम अर्थमस्ति लगना उसमें लग रहा है ऐसे तो यहाँ पे वो अर्थ लेना है धर्मे रमति ऐसे इस इन धर्म यू कैन ऑल्सो टेक रमण कर रहे हैं धर्म में indirect meaning but it makes enjoying being in the dharma, he is enjoying being in the dharma and he stays in the dharma, correct he abides exactly yes better the second meaning is more direct obviously he is abiding dharma that is how we know yati is abide in dharma but the first meaning that ramate raman karte hain that also is correct he is enjoying being in dharma that also you can see in it सम्यक् अस्ति अस्तु अहं पठामि 12 तुभ्यं किं रोचते तुभ्यं कस्मिन् विभक्ति अस्ति फोर्थ केस हाँ चतुर्थी एकवचनम् अस्ति तुभ्यं
तुभ्यं किं रोचते, व्हाट डू यू लाइक, फॉर यू व्हाट इज एंजॉयमेंट, वैसे पूछ रहे हैं. तुभ्यं किं रोचते. अस्तु. नवम we didn't do. नवम कविः नृपं धनं याचते तं भाषते वन्दते च. कविः, the poet, नृपं धनं याचते is asking for money from नृप, king, and also तं, नृपम, तम मतलब यहाँ पे नृपम लेना है. नृपम भाषते वन्दते च, he is doing भाषण and वंदन of नृप. If in Hindi दृष्टान्तः अस्ति, हिंदी अस्ति, हिंदी भाषायां ट्रांसलेशन अस्ति. कवि राजा से धन मांगता है, बोल सकते हैं, और उससे बोलता है और प्रणाम भी करता है राजा को. अस्तु. अवंतिका जी कृपया वदतु हिंदी से संस्कृत बनाओ. प्रथमः, तू गुरु की सेवा करता है वो सुख पाता है और सुखपूर्वक करता है. तुम गुरुदेव सेवया करोति. पश्यतु कृपया उदाहरणवाक्ये अष्टम किं भवति. उदाहरणवाक्ये अष्टम. त्वं गुरुं सेवया सुखं लभसे. हाँ, तो गुरु की सेवा करते हैं तो हम गुरुम सेवसे. हाँ, सुख पाता है, सुखम लभसे, सुखपूर्वक रहता है, वर्धसे, और वर्तते, और वसति. यू कैन से त्वं वससि, सुखपूर्वक, सुखेन वससि, you can say. But in that will we not use saptami for this, because sukhena vasatemi, he resides in sukha, like that, no? Correct. Sukhena is no, not sukhe. Would we say sukhe as in grihe? You can say sukhe vasasi. You can say sukhe vasasi. Sukhena vasasi will be through sukha you are there. Sukhe vasasi is also acceptable. It is giving the meaning. Sukhe vasasi. The sukha purvak. I was thinking about the purvak part. सुख पूर्वक, जैसे हम देख रहे थे खेद पूर्वक, तो it will be, but generally we will say sukhena vasasi is better. Okay, thank you. Sorry, thank you. Because it makes more, it just sounds better, you know. Sukhena vasasi sounds natural. Sukhe vasasi is living in the happiness. So the sukha will become vishaya. You can say, but sukhena vasasi is more natural. अस्तु. अवंतिका जी भवती एव वदतु. 13th. मध्याह्नः में तु यथा आना. हाँ. अत्र आगच्छ. हाँ, सम्यक्. मध्याह्ने त्वम् अत्र आगच्छ. बहु सम्यक्. पर्फेक्ट. अस्तु. सुंदर जी कृपया वदतु 4th. 4th one. Okay, so mokshe tvam yatate. Yes, you can say yatate अथवा यत्नम अथवा कुरुते. So yatnam kurute. You have to say tvam. Sorry, yata say it will be firstly. Tvam they have given, right? मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते हो. So so you're correct. So moksha se yatasi, correct. यतसे त्वं मोक्षे त्वं यतसे. अपि च यत्नम, जैसे पठनम करोति. हाँ, वैसे यत्नम
Kuru, that ka, I have to search. करोषि Karoshi. लट् लकार अस्ति Yatnam karoshi. सम्यक् सन्ध्याजी कृपया वदतु तृतीय I'll start. हाँ बालक मार्ग में सन्यासी को देखता है. हाँ। बालक हाँ। मार्ग के हाँ सन्या यति यू कैन यूज यति शब्द बालकः मार्गे सन्यासी यू कैन यूज यति शब्द यति इंस्टेड ऑफ सन्यासी यति ओके हाँ। यति पश्यते पश्य ईक्ष धातु यू हैव टू यूज ईक्ष धातु बालकः like I should इक्षते सम्यक् बहु सम्यक् कॉन्फिडेंस बालकः मार्गे यति शब्द यू यूज द्वितीय एकवचनम लाइक हरि शब्द इट विल बी सो इट विल बी यतिम बालकः मार्गे यतिम ईक्षते इक्षते सम्यक् वंडरफुल केतुल जी कृपया वदतु अष्टादश जिमे ज्ञान तुझ में इस इन चतुर्दश उदाहरण वाक्य चतुर्दश पश्यतु कृपया वही हाँ त्वयि सत्यं वर्तते हाँ वही ज्ञान हाँ वही ज्ञानं हाँ ज्ञानं वर्तते सम्यक् त्वयि ज्ञानं वर्तते सम्यक् अस्ति अस्तु अशुद्ध टु शुद्ध अशुद्धवाक्य देव गिवन् त्वं नृपस्य सेवसे नास्ति त्वं नृपं सेवसे द्वितीया भक्ति प्रयोगः अस्ति साधुः नृपात् अन्नं भिक्षते नास्ति साधुः नृपं when भिक्ष धातु comes द्वितीया भक्ति is used not पंचमी विद्या सत्यात् शोभते विद्या सत्येन शोभते हाँ सुंदर जी भवतः प्रश्नः अस्ति अत्र सत्येन शोभते स्वसुखेन वससि इति वत् Yeah, correct. अस्तु Thank you. दो क को बहुवचन बनाओ तो एकम एकम करें एकम एकम कुर्वामः अस्तु सुंदर जी कृपया वदतु प्रथमः The first one. हाँ Okay, so तू राजा की सेवा करता है. That one? नहीं ख में आप कीजिए वो भवान करोति करोतु कृपया चतुर्दश मैं तुमको बुलाता हूँ मैं तो. So vayam. So we have to start with vayam. मैं तुमको बुलाता हूँ. So vayam. So again तुमको we don't have to make that. So तुमको will be त्वाम. सम्यक् So vayam त्वाम बुलाता हूँ. So therefore here the bulana is ahwe. Well, that's the word we saw. सम्यक् Yeah, so ahvate will it be? नो it will be like bhavati ahvayati So if it says bulao, yeah, so bulata hu means in future. So would you say ahveshyami? सम्यक् ahvay bulata हूँ is not future bulata हूँ is lat lakara only lat lakara ahvayami but what you said is correct if it were फिर मैं बुलाऊंगा तो फिर हाँ I ahvayishyami सम्यक् तो बुलाता हूँ ahvami. सम्यक् वयं परन्तु वयं So आह्वयामः आह्वयति सम्यक् बहु सम्यक् अस्ति अवन्तिका जी कृपया वदतु मध्याह्ने भवती मध्याह्ने यः आना मध्याह्ने अत्र आगच्छ बहुवचने किं भवति
युवाम यूयम, हाँ सॉरी यूयम, युवाम पर बहुवचन यूयम यूयम, अत्र आगच्छथ आगच्छत, सम्यक्, बहु सम्यक्। ह्रस्व दीर्घ नास्ति क्योंकि लट् लकार लोट् लकार अस्ति। आगच्छत बहु सम्यक् अस्ति। मध्याह्ने युवाम् अत्र आगच्छत, सम्यक्। संध्या जी कृपया वदतु अंतिम तो धन सुख और ज्ञान पाता है। यूयम यूयम धनम सुखम च ज्ञानम वर्तते लभ लब्धाति यूज लभते लभद्वे और लभते च बाद में आएगा। तू धन सुख धनम ज्ञानम च हाँ लभ ओके लभद्वे, लभ सम्यक, लभ बहुत सम्यक। केतु जी कृपया तो तुझ में ज्ञान है वही। तुझमें ज्ञान है हाँ बहुवचन वही 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 इसे वर्तते हाँ, वर्तते means, वर्धते बहुवचने किं भवति? वर्धते एकवचने अस्ति। वर्तते इति वचनं। हाँ तो बहुवचने प्रवर्धते वर्धन्ते। यहाँ पे लिखे सेवते सेवते सेवन्ते, वर्धते वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, परंतु त्वम त्वयि यू आर सेइंग राइट। तो अच्छा ज्ञानम ज्ञानम वर्धन्ते, अच्छा यू आर सेइंग ज्ञानम विल ओनली बी प्रथम एकवचन, ज्ञानम विल नॉट बी बहुवचन। इज दैट व्हाट यू सेइंग? सम्यक। त्वयि ज्ञान ठीक है। तो युष्मासु ज्ञानम वर्धते, युष्माकं ज्ञानानि वर्धन्ते। जैसे व्याकरण ज्ञानम न्याय ज्ञानम वेदांत ज्ञानम सर्वे ज्ञानानि ज्ञानानि वर्धन्ते युष्मा। अस्तु वाक्य बनाओ, टाइम नहीं है, करेंगे। अवंतिका जी कृपया तो प्रथमः श्रेष्ठः अपि च श्रेष्ठः एकं वाक्यं श्रेष्ठः श्रेष्ठः शब्देन सह। श्रेष्ठ means elder. श्रेष्ठ मीन्स बेस्ट, यू कैन से एल्डर। ज्येष्ठः विल बी एल्डर, ज्येष्ठः, श्रेष्ठः बेस्ट। हाँ एकवाक्यं छात्राणां सः श्रेष्ठः, सम्यक् अस्ति। सुन्दर जी कृपया वदतु सायङ्काले। सायङ्काले सायङ्काले अत्र संस्कृतं क्लास् अस्ति। कक्षाः रमारमे रमाः कक्षाः कक्षाः अस्ति सन्ति कक्षाः सम्यक्। मेनी क्लासेस वन हाँ यू सेड कक्षाः न क्लासेस। कक्षा अस्ति, कक्षाः कक्षाः सन्ति, सम्यक्। संध्या जी कृपया वदतु दिने। दिने हाँ दिने दिने विद्या लभते। Like दिने we can read. सम्यक्, actually that's very good. दिने विद्या लभते। दिने you get विद्या, विद्याम you have to say because विद्या भक्ति प्रयोगः भवति भविष्यति। दिने विद्यां लभते, सः दिने विद्यां लभते, सम्यक्, बहु सम्यक् अस्ति। केतुजी कृपया वदतु वर्तते। दिने सायङ्काले च श्रेष्ठस्य कर्म वर्तते। बहु सम्यक्,
दिने सायंकाले च श्रेष्ठः कर्म वर्तते। सम्यक्, बहु सम्यक् अस्ति। अस्तु, सन्धि वयं पश्यामः, परन्तु प्राक्टिकल् एक्साम्पल्स् दृष्टान्तः मण्डे रविवारे वयं द्रक्ष्यामः। सन्धिकार्ये अस्ति स्तोः शुनाश्चुः। स्तोः शुनाश्चुः, एकनिमिषः, स्तोः शुनाश्चुः, अस्तु, स्तोः शुनाश्चुः वदति ईस या तवर्ग से पहले या बाद में ईश या चवर्ग कोई भी हो तो ईस और तवर्ग को क्रमशः ईश और चवर्ग हो जाता है। ईस या तवर्ग पहले, ईस या तवर्ग से पहले या बाद में ईश या चवर्ग कोई भी अगर है तो ईस विल बिकम ईश, तवर्ग विल बिकम चवर्ग। ईस टू ईश, तवर्ग तो चवर्ग। ईश और तवर्ग को क्रमशः ईश और चवर्ग हो जाता है। जैसे रामश्च रामश्च, कस प्लस चित कश्चित, ईश हैज बिकम ईश, कश्चित कश्चित। रामस बिकम च रामश्च। अपि च सत् चित् तवर्ग अस्ति, तवर्गः चवर्ग भवति। सत् चित् सच्चित्, जैसे सच्चिदानंद, सच्चित् आनंद सच्चिदानंद। अपि च शर्ंगिन जय, शर्ंगिंजय। There is a mistake in the reading, I think. They made a mistake in the book. I don't know if PDF is okay. Sharngin, Sharngin Jaya, Sharngin Jaya. In the book they have given Sharngin. You have to add one more Dirgha. You have to make it Dirgha. Sharngin Jaya, Sharngin Jaya. Yach na, Yanya, Yanya. So Yanya, Chavarga has become Tavarga has become Chavarga. Na became Nya. Because in Chavarga it is Nya and Tavarga Na. So Chanya, Nyanya has become. Yach plus Na, Yanya. What we have to remember is always is, ish. Chavarga, Tavarga. Tavarga, Chavarga. Is, ish, Tavarga, Chavarga. Astu. सुंदर जी कृपया तो प्रथमः राम संधि करो, पेज 33। रामश्च। अपि च अन्तिम कश्चन, सम्यक्। संधि विच्छेद करना, हरिश्च। हरिश्च। It will be harihi cha, harischa. That we will have in a different sutra. That visarga, visarjaniyasya saha, that will be. That ihe will be is. That, no, but they have given the same thing here in the last line on the previous page. Correct, correct. No, you are correct. I am saying no, it is what right. I think it's given here as part of this abhyasa only. Yes, because haris is the pratipadika. We have seen, right? Haris plus that pratyaya will become harihi. Haris is the prati, like namas is the manas is the pratipadika, and then we say manaha. So like that they are again pratipadika. Haris. हरिश्च सम्यक् अस्ति। हरिश्च हरिश्च। अस्तु, अवन्तिका जी कृपया वदतु। बालश्चलति किं भवति? बालश्चलति। सम्यक्। तच्चरित्रं, तच्चरित्रं जैसे सच्चिदानंद। हाँ, चकार निगम चकार, तच्चरित्रं। सम्यक्। उच्चरति किं भवति? हाँ, उच्चरति। उत उच्चरति। उच्चर यहाँ पे संधि विच्छेद में है, उच्चरति। तो चवर्ग इज देयर। चवर्ग कहाँ से आया? तवर्ग से। तो उच्चरति अगर है तो उत प्लस चरति। भवति एव वदतु। भवति एव सच्चरित्र किं भवति? सम्यक्, सच्चरित्र। अस्तु, संध्या जी कृपया वदतु। सिंहाश्चरन्ति। हाँ, सिंहास चरन्ति। चरन्ति। हाँ,
सिंहान् चरन्ति सिंहाश्चरन्ति सम्यक् अस्तु तत् च किं भवति तच्च सम्यक् तच्च और इतश्च संधि विच्छेद करना चतुर्थ इतश्च इतस् प्लस च जैसे हरिश्च इज हरिस् प्लस च इतश्च इतस् प्लस च इतः प्लस च इतस् प्रातिपदिक इतस् प्लस च सम्यक् अस्तु केतुलजी कृपया वदतु संजयः संजयः अपि च भवानेव वदतु सद्जनः सज्जनः सम्यक् भवानेव वदतु दुश्चरित्रः दुश्चरित्रः अस्तु कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् वयं रविवारे उत्तरं ददामः अस्तु ओम रविवारे अहं कक्षां न गन्तुं शक्नोमि रविवारे नास्ति सोमवारे मंडे शक्नोमि यू हैव टू से रविवारे अहं कक्षायां गन्तुं न शक्यामि अस्तु मतलब मंडे नॉट संडे मंडे सोमवारे सोमवार ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति 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 ओम।